उनको बोलिए डिस्टर्ब ना करें, मिस्टर मानस मनी वर्मा उनको डिस्टर्ब ना करें। अभी भी अंग्रेजों के जमाने की सरकार चल रही है कि अधिकारी सोचते हैं कि कॉमन आदमी का दमन किया जाए, बिकॉज यू आर एम्पावर्ड टू suppress the voice of a common man. You are a public servant to serve the people, not to suppress them. जी बताइए। आप तो लैब अटेंडेंट है। लैब अटेंडेंट, मैं लैब असिस्टेंट नहीं है। लैब असिस्टेंट हो गया तो वो वही आप पॉइंट बता दीजिएगा कब बन गया लैब असिस्टेंट। काइंडली सी माय लाइफ पेज 30 P6 P6 पेज पेज 30 हाँ पेज 30 टाइप कॉपी में पढ़ रहा हूँ जी पेज 30 यस 30 ऑन पेज रिलेवेंट मैं टाइप कॉपी 76 आप तो मूल दिखाइए मेरे को। मूल ये क्या पेज लिखा? 30 हाँ सेकंड पेज है पैरा 3 में हाँ पढ़िएगा। दिनांक 15/11/59 के बाद जो प्रयोगशाला सहायक 15/11/59 के बाद हाँ अथवा प्रयोगशाला परिचारक में सेवक जी नियुक्त किए गए हैं उनकी योग्यता मैट्रिक अथवा हायर सेकेंडरी है, उन्हें उसे पुनरीक्षित वेतनमान स्वयं वेतनमान रुपए इतने इतने का लाभ दिया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का परिणाम प्रयोगशाला सहायक होगा और वे तृतीय श्रेणी माने जाएंगे। देयर आफ्टर इज ट्रीटेड एज ए सहायक प्रयोगशाला सेवा। जी बताइएगा। मैं काइंडली से हाँ ठीक है रुक जाइएगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम श्री राजकुमार त्रिपाठी commits that in WP 10192/2013 he has enclosed government order dated 23/12/76 as annexure P6 wherein the lab attendants who had passed metric or higher secondary examination were renamed as lab assistants. Full stop. Let a specific affidavit of the concerned commissioner be filed in this behalf, because there is a deliberate attempt on behalf of Shri Darshan Soni to mislead the court by saying that petitioners themselves had admitted that they were appointed as lab attendant and not as lab assistant. This पोजीशन चार्ट दीजिए वो आप। बट मैं सब पेज चार्ट आपने ये क्वेरी की थी कोर्ट ने कि इनिशियल मैं बताऊंगा सब लिखूंगा इसमें। आप चार्ट दीजिए। आई एम नॉट मतलब व्हाट इज रिकॉर्डेड इन चार्ट कहाँ है प्लीज ये दीजिए। आई एम चार्ट मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लीडिंग्स जो ठीक ठीक बिल्कुल ठीक है। आई एम नॉट मिसलीडिंग द कोर्ट। ठीक है बिल्कुल ठीक है। क्या लिखा? एंड दिस पोजीशन इज रिप्लिकेटेड इन WP 10262/13, WP 10267/13, WP 10481/13, WP 10647/13 and WP 11081/13. Full stop. Next paragraph. To clarify the clouds, it is necessary to point out that the respondents have submitted that those who were appointed as lab attendants are not entitled for upgradation as assistant teacher, but those who were appointed as lab attendant and were possessing necessary qualification and have been upgraded to the post of lab assistant, a class 3 post, whereas post of lab attendant is a class 4 post, as is evident from annexure P6, then why a specific stand has not been taken by the respondents in their return in regard to annexure P6? बताइएगा P6 के बारे में क्या कहा आपने इंक्वायरी रिपोर्ट में? इंक्वायरी रिपोर्ट में P6 के बारे में क्या कहा है? Mr. Singh, where is your stand in the inquiry report about annexure P6? इसमें देखिए कहाँ है। उनको बोलिए डिस्टर्ब ना करें, मिस्टर मानस मनी वर्मा उनको डिस्टर्ब ना करें अभी। सर इंक्वायरी रिपोर्ट के पेज 4 पे आप पेज 4 पढ़िएगा। छानबीन समिति गठन के प्रथम आदेश में कहाँ लिखा है? इसी केस का जवाब पढ़ रहे हैं ना आप। R2 जो है जांच प्रतिवेदन,
जी Same R2 R2 में कहाँ लिखा है? छानबीन समिति के प्रथम आदेश में। प्रयोगशाला सेवक से हाँ, सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर की गई पदोन्नति एवं नियुक्ति के संबंध में जांच की अपेक्षा की गई है। सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर नियुक्ति 97 में हुई। लिख तो रहे हैं आप। इन नियुक्तियों से न होकर मात्र प्रयोगशाला सेवक से इतने पद पर नियम विरुद्ध पदोन्नति से है। अब आप बताइएगा, जब 1976 का खुद ही आ गया सर्कुलर आपका कि जो क्वालिफाइड है दे विल बी ट्रीटेड एज क्लास 3 लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, फिर उसके लाइट का उसका कहाँ जिक्र किया है आपकी इस जांच कमेटी ने? इसमें बताइए पहले जो कोर्ट का क्वेरी है वो बताइए। इसमें कहीं आया है? नहीं सर, इसलिए नहीं है। तो फिर इस जांच रिपोर्ट को कैसे एक्सेप्ट कर लिया जाए जब आपके अधिकारी पढ़ते ही नहीं? अभी भी अंग्रेजों के जमाने की सरकार चल रही है कि अधिकारी सोचते हैं कि कॉमन आदमी का दमन किया जाए, बिकॉज यू आर एम्पावर्ड टू suppress the voice of a common man. You have yet not realized that after so many years of independence, you are a public servant to serve the people, not to suppress them. Where is it? Should I call you a commissioner? कुछ भी बहस करेंगे आप लोग, कुछ भी बात बताएंगे उल्टी सीधी। Shri Singh, Additional Director Public Instructions, admits that in the inquiry report annexure R2 dated 4/8/2011 there is no mention of annexure P6, though on internal assurance given to the Legislative Assembly was in regard to appointment of lab attendants to the post of assistant teacher science and not with any other issue. That is, it is not concerned with the issue of promotion of lab assistants to the post. Federation Annexure P6, which is the order of the department and was passed on 23/12/76/27/76 and should have been made available to the inquiry committee by the department itself. Full stop. This order has been passed in the name of and by the order of the governor and its copy was endorsed to all the divisional education superintendents and district education officers. Let principal secretary of the department file his/her personal affidavit that how they can be oblivious of government orders of 1976 and make incorrect pleadings before the High Court, and why exemplary cost be not imposed on the state for making incorrect representation before the High Court, and that too through their government advocate and the officer of the level of the additional director. Let affidavit of the principal secretary be filed within 7 days. List this case on 20 March top of the list.